So, welcome dear students, and in today's class, we are going to study about at least in a very brief categorization, the history of Iran and the politics of Iran and why it is important. So, let us start with an introduction, the basic introduction of Iran. तो ईरान के बारे में in the next class we will jump towards the geopolitics of it. We'll talk about India-Iran connections. We'll talk about the impact of Iran Revolution, the Green Revolution, which later took place, and what right now is the foreign policy of Iran and bilateral ties of Iran with other different countries. How is it changing over the period of time? सो उससे पहले हमें ईरान को समझना बहुत ही नेसेसरी है. सो लेट्स स्टार्ट अबाउट फ्यू फन फैक्ट्स अबाउट ईरान. जैसे फॉर एग्जांपल ईरान का अपना एक कैलेंडर है. मोस्ट ऑफ द रिलीजन्स हैव देयर ओन कैलेंडर. ईरान का अपना एक स्टेट कैलेंडर है. द वीकेंड्स इन ईरान आर थर्सडे एंड फ्राइडे इंस्टेड ऑफ सैटरडे एंड संडे जो हमारे कॉन्टेक्स्ट में होता है. इट इज बिकॉज फ्राइडे को जुम्मा की प्रेयर्स होती हैं, तो थर्सडे एंड फ्राइडे आर दी वीकेंड्स in Iran. Most of the university students in Iran are females, which also points to the fact that we are going to have a class on the protest movements on hijab that took place in Iran and the questions of gender, sovereignty, and the independence of one's own body rights and everything. दूसरा, ईरान का पर्शियन वोडका बहुत ही फेमस है. इसको अराक साकी बोला जाता है. The thumbs up symbol in Iran is really considered very rude. Iran ka one of the biggest gas reserves in the world hai. It also is very famous for the oil production. Iran is considered the only home to the critically endangered species of Asiatic cheetah. Guinness World Book Record में Iran is included for having the largest hand-woven carpet. Iran के जो carpets होते हैं, they are very critically acclaimed and very expensive also. कुछ अननोन फैक्ट्स ईरान के बारे में क्या है. पहला, ईरान इज वन ऑफ दोज ओल्डेस्ट कंटिन्यूअसली इनहैबिटेड सिटीज दुनिया का. मैंने सिटी यहाँ पे बोला जबकि ईरान एक्चुअली इज अ कंट्री, बट इन द एंशिएंट एंड बिफोर दैट प्री हिस्टोरिक आर्काइविंग, जो ईरान था वो किस तरीके से एक सिटी से धीरे धीरे करके एक सिविलाइजेशन बना, उसके तहत ये बात की जा रहा है. जो सिटी ऑफ सूसा है, विच इज लोकेटेड इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ ईरान, ये 5,000 साल से ज्यादा टाइम से इनहेबिटेड रहा है. सबसे ज्यादा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ आउटडोर म्यूरल्स. म्यूरल्स आर वॉल पेंटिंग्स. द एंटायर वॉल बीइंग पेंटेड विथ वेरी इमैक्युलेट फिनेस. ये ईरान की एक आर्टिस्टिक आर्ट्स एंड कल्चर में, आर्किटेक्चर में ईरानियन टिपिस्ट्री इज वेरी वेल नोन. जो उसका सिटी है तब्रीज, उसमें पूरा का पूरा अराउंड 10,000 स्क्वायर मीटर्स जो है वो ईरानियन कल्चर हिस्ट्री का म्यूरल्स बने हुए हैं. ईरान का सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं वेस्ट एशिया में. देयर 24 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन ईरान जो यूनेस्को ने इंक्लूड किया है अपने लिस्ट में. इसमें पर्सपोलिस और जो हिस्टोरिक बाजार्स हैं, सूक्स हैं तब्रीज के, इसमें इंक्लूडेड हैं. इसके अलावा Iran is the largest producer of caviar in the world. Iran has the largest number of Shia Muslims in the world. It is the first and primarily the only country which predominantly mostly Shia population, followed by Azerbaijan. 90% of Iranians are Shia Muslims. It is the largest Shiite country in the world. इनका बहुत strong tradition रहा है poetry में, philosophy में. बहुत सारे poets जैसे रूमी, हाफिज, सादी, they are the greatest poets in world literature who have Persian descent. Largest covered बाजार या सूक्स जो होते हैं वो तबरीज की सिटी में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं. एंड बहुत बिजी, जैसे चांदनी चौक फॉर एग्जांपल या ओल्ड हैदराबाद का जो एरिया है, वो सारे जैसे एक कल्चरल नुआंस है उसका, वो ईरान में यहाँ देखा जाता है. द कैपिटल ऑफ ईरान इज तेहरान. यहाँ पे आपका एस्फहान जो है वो कारपेट मेकिंग के लिए बहुत फेमस है. सो व्हाई इज ईरान इम्पोर्टेंट, उससे पहले उसका लोकेशन देखिए. ईरान के इधर इट इज टर्की, इराक, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया,
some parts of Afghanistan, some parts of Pakistan. तो यहाँ पे आपके इतने सारे कंट्रीज इसके नेबर्स हो गए, जैसे 1 2 3 4 5 6, नॉट 6 7 to 8 कंट्रीज इसके नेबर्स में आ गए। और ये पर्शियन गल्फ जो मैंने आपको, आई हैव टोल्ड अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ द टर्म अरेबियन गल्फ एंड पर्शियन गल्फ, सो इफ यू आर लुकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ईरान देन इट इज पर्शियन गल्फ। और यहाँ नीचे आपका यहाँ ओमान भी इज नेक्स्ट टू ईरान। अब ईरान शब्द का मीनिंग क्या है? द टर्म ईरान कम्स फ्रॉम द पर्शियन वर्ड जिसका नाम का मतलब है लैंड ऑफ आर्यंस। ये लैंड ऑफ आर्यंस जो है, जो इंडो यूरोपियंस हैं, दे इमर्ज्ड अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल आर्काइव फ्रॉम 2000 BC। इंडिया आए वो 1500 BC में। और इसको 1935 तक पर्शिया ही कहा जाता था। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि ग्रीक आर्काइविंग में इसको पर्सिपोलिस या पर्शिया से, जो आज का सिटी फार्स है, उससे लोकेटेड किया गया था इन द हिस्टोरिकल मैपिंग। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम द टर्म पर्शिया was abandoned and the term Iran was used as a national identity of it. The currency of Iran currently is Iranian rial. $1 is around 43,000 Iranian rial because of the impact of sanctions which have been there on Iran since 1970s, 80s. तो ईरानियन गवर्नमेंट ने अपना खुद का एक लोकल करेंसी बना दिया है जिसका नाम है तुमान, विच इज इक्वल टू 10 रियाल्स, सो दैट जो डोमेस्टिक करेंसी पे जो ट्रांजैक्शंस होती हैं दे कैन बी ईज्ड आउट एंड डोमेस्टिक मार्केट इज नॉट affected by the international market of the forex decline or the foreign real value decline जो sanctions के कारण हो रहा है. So they have technically two currencies. ये है आपका रियाल और ये है तुमान। अब आया सबसे पहले, बिफोर वी टॉक अबाउट इस्लाम, वी हैव टू नो अबाउट ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म, जो इंडिया में पारसी कम्युनिटी है वो यहीं के डिसेंडेंट है। ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म एक एंशिएंट रिलीजन था जो पर्शिया यानी ईरान से 3500 years बिफोर, इवन बिफोर इंडो आर्यंस केम एंड ऑल ऑफ दैट, उस समय इट हैड इवॉल्व्ड। आज के दिन देयर आर 1 लाख के करीब members of Zoroastrianism in the world. So it is a minority religion. It was founded then by Prophet Zoroaster, जिनको ज़ाराथुस्त्रा भी कहा जाता है, who is believed to have lived between 1700 to 600 BC. ये एक monotheistic religion है that is believes in one God, and it is centered around the worship of God Ahura Mazda, जिनको creator of mankind and the universe and source of all good things माना गया है। Zoroastrianism के followers believe करते हैं in the value of free will and not destiny, and also the importance of having a righteous life and so that they can achieve happiness and prosperity. It is one of the oldest of the revealed and revered religions in the world. There are several books that have been written about Zoroastrianism. ये prophet Zoroaster हैं, इनके ये symbols हैं. This is a symbol of Zoroastrianism. जो फेमस किताबें हैं, Zoroastrianism, Faith, Tradition and Modern Research by Solomon A. Negocian. The second book is Zoroastrianism, Their Religious Beliefs and Practices by Mary Boyce. And third is The Dawn and Twilight of Zoroastrianism by R.C. Zegna. So most of them are Western scholars. Zoroastrianism पर्शियन एम्पायर के दौरान इवॉल्व किया था। इनके भी प्रॉफिट थे, ज़ाराथुस्त्रा नाम था इनका। जो इनकी रिलीजियस बुक है, which is the teaching of Zoroaster, is then the Avesta. They believe in one universal powerful God, and Ahura Mazda is the god of Zoroastrianism, the one god. ये फायर का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा देती है ये रिलीजन. इट इज कंसिडर्ड एज अ सिंबल ऑफ प्योरिटी एंड डिवाइन विजडम. दे हैव टेंपल फायर्स. आई विल शो यू हाउ दे लुक लाइक. फायर टेंपल्स जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं. जो इस धर्म के प्रीस्ट होते हैं उनको मागी कहा जाता है. दे आर revered and they have the obligation and duty to maintain the
religious sacred fire and have religious rituals. Till Islam arrived in Persia. So Islam technically, if you can say, you can trace back its origin from 610 AD, which is 7th century BC. उससे पहले ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म पर्शिया में था. अब 2 लाख से 1 लाख के करीब ज़ोरोआस्ट्रियन लोग हैं दुनिया में. मेजॉरिटी ऑफ देम लिव इन इंडिया, जो पारसी कम्युनिटी कहलाती है. ये इनका फायर टेम्पल्स है. This is the fire temple that they worship. You can see कि यहाँ पे they also have the ghanta that we also have in Hinduism. So sound, fire, the elements of earth, they are revered in Zoroastrianism. अब let us go back to the history of Iran. तो history of Iran starts from 5th millennium BC and इसमें बहुत सारे अलग अलग empires आए, जैसे Elamite, Achaemenid बहुत important हैं, Parthian and Sasanian. हम बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे सबकी. We'll just talk a bit about Achaemenid Empire, जिसके जो फाउंडर थे in 550 BC, वो साइरस द ग्रेट थे. And at that point of time, it was one of the most powerful empires in the world. और इराक, ईरान, अफगानिस्तान, आपका अजरबैजान, अर्मेनिया, ये सब भी था उसके पार्ट में. लेकिन there were several wars between Russia that will happen towards after 1400 AD, जिसमें अर्मेनिया, अजरबैजान ये सब हट जाएंगे इस पर्टिकुलर एम्पायर के रीच से. तो आप देख रहे हैं कि अर्मेनिया, अजरबैजान, इराक, some parts of Libya also, they did not come towards India, today's India, they could not. इनको अलेक्जेंडर द ग्रेट ने बहुत बड़ी चुनौती पेश की थी, and that is why they started degrading at that point of time. जब ईरान में इस्लाम की एंट्री हुई 7th century BC में, तो इस्लामिक स्कॉलरशिप का ये बहुत फेमस सेंटर पॉइंट बन गया. The Iranian scholars were very much predominant in 3 basic disciplines. One was mathematics, the other was astronomy, and the third was your medicine. So Persian scholars were they played a very important role in the growth of these 3 kinds of disciplines. Art, science, literature बहुत ज़्यादा ग्रो किया. तो आज की जो फारसी लैंग्वेज है वो अरेबिक स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, लेकिन इनका उस समय अपना स्क्रिप्ट था. अब आया सफेविड डायनेस्टी. सफेविड डायनेस्टी जो है, आपके जब इस्लाम इंट्रोड्यूस हुआ तो उस समय उसका गोल्डन एज ऑफ इस्लाम कहा जाता था, जिसमें ईरान बहुत ज्यादा फ्लरिश किया. 16th सेंचुरी में सफेविड डायनेस्टी या एम्पायर ईरान को कंट्रोल करता है, एंड it becomes a major competitor to the Ottoman Empire. Safavids were primarily Shia, and that is why the entire conversion of a lot of people into Shia Islam took place during their time period. So as you can see, the Safavid Empire was predominant over this area. Ottoman Empire was predominant in the neighboring area, and Mughals were here. So if you look into the art and architecture of a lot of things, the paintings and how they are done, the calligraphy that is practiced, the script that is used, बहुत similar है to what you see in the Mughal times and the Mughal paintings of India also. तो Safavid dynasty का Ottoman Empire से काफी regular time पे skirmishes चलते रहते थे. They had regular battles. Ottoman Empire became Sunni and Safavid Empire was hardcore Shia. ये 1501 से 1736 तक ईरान को रूल करेंगे. It was formed by शाह इस्माइल I, जिन्होंने शिया इस्लाम को ऑफिशियल रिलीजन ऑफ ईरान की तरह स्टैब्लिश किया. इसके अलग अलग जो तालुकास कह सकते हैं या रीजन्स हैं उसको यूनाइट किया. काफी कल्चरल अचीवमेंट रहा इनका. दे वर पेट्रनेज ऑफ आर्ट्स एंड लिटरेचर. द सफेविद स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग वाज वेरी वेरी फेमस. Now if you look into the Mughal history and Safavid history, so there was competition for sure, but there was also very strong alliances. बाबर के बाद जब हुमायूं आए थे तो शेर शाह सूरी ने उनको, जो बिहार के एरिया को उस समय रूल करते थे, ही forced him out, and Humayun had to go away and he went to Safavid Empire. That is where
they inculcated this kind of relationship between Indo-Persian architecture. So when Humayun came back, he got a lot of Persian architects. So आपके Humayun's tomb में, Taj Mahal में, Red Fort में, Jama Masjid में, all these mural architecture, mural paintings, the glass work and all of that you see, miniature paintings that you see, that has been inspired by Iranian culture over there. Safavids were very famous for their military powers also, and it was one of the most powerful empires in the region, which was often fighting with the Ottoman Empire. These are musicians, the women musicians who used to perform in the royal courts of the Safavid dynasty. And just look at the very intricate finesse of this painting. Very intricate finesse. तो ये इनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर में बहुत बड़ा इनका रोल था इन क्रिएटिंग एंड क्यूरेटिंग देयर ओन फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर एंड आर्ट व्हिच इज स्टिल वेरी प्रिडोमिनेंटली फेमस. दैट इज व्हाई वन ऑफ द रीजंस कि यूनेस्को ने इतने सारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ईरान में लोकेट किए हैं. जब शाह अब्बास द ग्रेट आए, हु रूल्ड द सफविद डायनेस्टी फ्रॉम 1588 to 1629, दैट वाज द हाइट ऑफ द पावर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. दिए उस समय अब्बास ने बहुत सारा रिफॉर्म्स मॉडर्नाइजेशन के लिए इम्प्लीमेंट किया. इरानियन आर्मी को काफी उन्होंने आगे ले जाने की कोशिश की, गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया, इकोनॉमी को रिवाइटलाइज किया, ट्रेड एंड कॉमर्स काफी आगे गया. सिल्क का, कारपेट वीविंग का, पॉटरी का, सेरेमिक्स का काम ईरान में बहुत आगे गया. उस समय जो कैपिटल था इस्फहान था, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज इन ईरान इवन टुडे, and very, very lavish public projects of art and architecture can be seen over there. Irrespective of so many achievements, Safavid का बहुत बड़ा challenge था कि external threats जो हैं Ottoman से काफी आते रहते थे, तो religious conflict बहुत regular था. 1736 में Safavid dynasty failed and it was overthrown by Ashprafid dynasty, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक चली नहीं. Then the Qajar dynasty came over. सफाविद डायनेस्टी के बाद से बहुत सारे छोटे छोटे डायनेस्टीज आए, उनका सोशल कोहेशन बहुत स्ट्रांग नहीं था. एंड देन फाइनली 1796 में कजर डायनेस्टी आई, और कजर रूल वाज मार्क्ड बाय इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियन पावर्स का इन्फ्लुएंस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. इट इज आल्सो लाइक 1800s नाउ, यूरोपियन colonialism, ब्रिटिश, फ्रेंच, इट हैज स्टार्टेड. सो यूरोपियन पावर्स का इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस ईरान का बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया था. कजर डायनेस्टी जो है रूल करती है 1789 से लेकर 1925 तक. इनके जो फाउंडर थे, ही वाज आगा मोहम्मद खान, जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं. एंड ही केम टू पावर बहुत ज्यादा सोशल एंड पॉलिटिकल अपहीवल के बाद. कजर्स के बहुत सारे चैलेंजेस रहे थे, स्पेसिफिकली लॉसेस टू रशिया, जो मैंने आपको बताया कि a lot of territory like Armenia, Azerbaijan, जो पहले सफेविड डायनेस्टी में आता था, धीरे धीरे करके इरानियन रशियन वॉर्स के कारण it was getting alienated from the empire. Irrespective of all of that, जो कजर डायनेस्टी है उसका भी काफी कल्चरल एंड आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स रहा, जैसे पोइट्री. So Persian poetry became very famous, calligraphy, the art of writing became very famous, और बहुत सारा पब्लिक प्रोजेक्ट्स स्टैब्लिश हुआ, जैसे रोड्स, ब्रिजेस, इरिगेशन सिस्टम्स एंड ऑल ऑफ दैट. Iran has 9 rivers, and Iran basically is like a plateau region surrounded by mountains all over, and then they have several wastelands. तो चारों तरफ से माउंटेन्स हैं, बीच में प्लाटू रीजन है, और बहुत सारे वेस्टलैंड्स हैं ईरान के. तो इरिगेशन सिस्टम स्टैब्लिश करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, बट दे वर एबल टू डू दैट. Qajar dynasty was again very famous for their paintings and the finesse which was carried out, and how they obviously the paintings obviously at that point of time were very irrespective of being very religious, they were also very elitist. So only the kings and the queens and the royal courts were often painted and made into a mural. So something like this is a mural जो पूरे के पूरे wall पे आपका नकाशी इस तरीके से बना रहेगा. So this was Qajar dynasty. फिर आई आपकी पहलवी डायनेस्टी. पहलवी डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट क्यों रहती है? क्योंकि पहलवी डायनेस्टी जाते जाते फिर वापस आ जाती है, और इसका अपना एक इम्पैक्ट रहा है इन ईरान.
तो जब आपका लेट 19th सेंचुरी होता है, कजर्स बहुत ज्यादा उनके ऊपर फोर्स होता है कि दे हैव टू गिव ओवर पावर because there are protests for new constitution. There's a coup also that takes place, and the Qajar dynasty is dissolved. They lose power. जो पावर में आते हैं वो है रेजा शाह. इनका पूरा नाम है रेजा शाह पहलवी, इसीलिए पहलवी डायनेस्टी इसको कहा जाता है. He was born in 1878 and he died in 1944. So just when your Second World War was ending, that is when he died. He was an Iranian military officer, politician. He was the minister of war and he was the prime minister of Iran. He was the first Shah of the House of Pahlavi in the imperial state of Iran. So it was not a republic, it was the imperial state. ये 15th December 1925 तक से शुरू किया इनका rulership, and then he was forced to abdicate. He was forced to leave due to the Anglo-Soviet यानी British Soviet invasion of Iran जो 1941 में होता है. उस समय ब्रिटिश और सोवियत यूनियन का इन्वेजन होता है ऑन ईरान, एंड रेजा शाह जो है had to abdicate in 1941. इनको फाउंडर ऑफ मॉडर्न ईरान कहा जाता है, एंड इनके टर्म में बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स रहे थे, बहुत सारे रूलर्स रहे थे. एट द एज ऑफ 14 जो है इन्होंने इरानियन कोसैक ब्रिगेड को ज्वाइन किया था, विच वाज लाइक द आर्मी यूनिट which was of Iran at that point of time. ये लेफ्टिनेंट बने थे, धीरे धीरे करके he was rising up in the ladder of the military. उसके बाद ये पूरा जो कोसाक ब्रिगेड है उसके हेड बन गए थे, and then he marched towards Tehran, the capital, and then seized it. और इसके कारण जो है they took over the power. Pahlavi dynasty came into, just like any other military coup, they took power. एंड सैयद जिया को इन्होंने ईरान का सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर बनाया था. इन्होंने नेशनल असेंबली बनाई ईरान की, एंड ही वाज अपॉइंटेड एज द लीगल मोनार्क. सो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन्होंने इंट्रोड्यूस की ईरान में, कजर डायनेस्टी को हटा के, उसके खिलाफ मिलिट्री कू करके. इन्होंने जो 1906 में कजर डायनेस्टी के टाइम पीरियड पे कॉन्स्टिट्यूशन बना था, इसको वापस से रीमॉडल किया, और इनको इनके डेथ के बाद रेजा शाह द ग्रेट बोला जाता है. आज तक भी इनकी लेगेसी जो है वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल रही है. कंट्रोवर्शियल क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि इन द नेम ऑफ मॉडर्नाइजेशन जो एथनिक नेशनलिज्म था ईरान का, बीट इन टर्म्स ऑफ कल्चर, लैंग्वेज, हिस्ट्री, ये सब इन्होंने काफी इन द नेम ऑफ मॉडर्नाइजेशन वेस्टर्नाइज कर दिया. इसीलिए, and he was also considered to be, stooge of the Western powers during that period of time. तो आए तो थे ये एंग्लो सोवियत इन्वेजन के कारण, so he was always considered to have that kind of, the Western support and backing, which was not considered to be very popular within Iranians. इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान को भी स्टैब्लिश किया था, बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्लांट्स भी इन्होंने शुरू किए थे, बहुत सारा मॉडर्नाइजेशन का काम भी शुरू किया था. एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, जैसे नॉट एग्जैक्टली निकाब या हिजाब, बट चादोर, which was an outer garment which women in Iran had to wear. So he abolished it, कि there's no need for women to wear that. जो उनका ये सोचना था कि जो व्हील है वो विमेन की मूवमेंट को लिमिट करता है, और ये सारे सेकुलर टेंडेंसीज इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे. तो जब इन्होंने ये इंट्रोडक्शन किया था तो काफी सारी मुल्लाज जो हैं इसको क्रिटिसाइज भी किया था. दे क्रिटिसाइज्ड इट कि ये इट इज द चॉइस ऑफ अ वुमन एंड नॉट अ स्टेट चॉइस टू हैव इट और टू नॉट हैव इट. उसके बाद ही वाज आल्सो द फर्स्ट इरानियन मोनार्क जो जूस को रिस्पेक्ट पे करने के लिए जूइश कम्युनिटी जो इस्फहान में है वहां पे गया, एंड जो इरानियन ज्यूज का जो कम्युनिटी है दे फेल्ट वेरी वैलिडेटेड एंड रिस्पेक्टेड. उन्होंने ज्यूज के लिए बहुत सारे नए ऑक्यूपेशंस और एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स भी शुरू किए.
He also stopped international and domestic photographers to photograph anything which could be considered backward in Iran. तो जैसे कैमल्स दिखाना या फिर क्लेरिकल ड्रेसेस दिखाना, ये सारी चीजों की फोटोग्राफी बैन कर दी थी इन्होंने, विच अगेन वाज कंट्रोवर्शियल. वेस्टर्न वर्ल्ड में ही वाज द पर्सन जिन्होंने 1935 में ये रिक्वेस्ट डाला कि लीग ऑफ नेशंस उस समय था कि पर्शिया शुड बी कॉल्ड एज ईरान, द लैंड ऑफ आर्यंस, एंड दिस इज द term which should be used for referring to Iran and not Persian. तो नेशनैलिटी लोगों की चेंज हो गई, उनका इट्स लाइक पर्शियन से ईरानियन. और उसके बाद जो है थिंग्स चेंज्ड. उसके बाद जो है इनका बेटा आता है तख्ती पे, जिसका जो 1919 में पैदा हुआ था एंड 1980 में ही पास्ड अवे. इट इज मोहम्मद रेजा पहलवी. तो इनका नाम क्या था? रेजा शाह पहलवी. बेटा का नाम था मोहम्मद रेजा पहलवी. He was the last Shah of the imperial state of Iran, and he took power from 1941 onwards till 1979, जब Islamic Revolution होगा और the Iranian Revolution will take place and theocracy will be established in Iran. इनको the Shah कहा जाता है, lovingly or unlovingly by the people. शाह का मतलब होता है जैसे शहनशाह, which is like the king of the kings. एंड इनको बहुत सारे टाइटल्स दिए गए थे, जैसे ही वाज लाइट ऑफ द आर्यंस एंड कमांडर इन चीफ एंड बहुत सारी इनको इन्होंने इंडस्ट्रियल और मिलिट्री प्रोग्रेस बहुत ज्यादा किया था ड्यूरिंग हिज टाइम इन ईरान. तो इनकी टाइम क्या था? ही वाज बोर्न टू रेजा खान, रेजा शाह पहलवी. उनकी दूसरी वाइफ का जिनका नाम था तज्द ओल मुलोक. ही वाज द एल्डेस्ट सन, इसीलिए पहले सक्सेसर बने. The competition was between 11 children actually. Inka jo as he was growing up, he looked at all the modernization attempts which his father had done, and he also knew about all these he believed in the Iranian nostalgia, you know, Azerbaijan, Armenia were parts of our territory. They were taken over by Russia and all of it. So इनका जो पैदाइशी है, इनकी 2 ट्विन सिस्टर्स के साथ हुआ था. एंड धीरे धीरे करके ही स्टार्टेड गेटिंग यू नो द प्रिविलेज ऑफ हिज पोजीशन दैट ही वाज entitled to. It was only in 1926 when he had this coronation as the crown prince, which is the heir of the dynasty after Shah passes away, his father passes away. इन्होंने एक किताब लिखी थी called as Mission for My Country, जिसमें इन्होंने अपने फादर को one of the most frightening men बोला था. Very dominating, very violent temper, very tough, fierce, ambitious. जिस तरीके से and किस तरीके से वो अपने subordinates को kick कर देते थे in the groin actually if they did not follow his orders. And he grew up as a very insecure and scared boy, very less self-confidence, according to Iranian American historian Abbas Milani. Reza Khan, जो father थे, उनका ये मानना था कि if the father shows love to the boys, it will cause homosexuality later in the children. So that is why he never showed love and affection. Over the period of time, जो है धीरे धीरे करके in 1930s जो है Reza Khan, he was, मतलब इनके father was an complete admirer of Hitler, because he saw that Hitler was someone similar to him in his narrative. Nevertheless, it was contested. Now, story क्या होती है? जब रेजा पहलवी आते हैं तो इनको अलग से एजुकेट किया जाता है, एंड इनको अलग से, मतलब
he has to follow the royal dictum of calling everyone his mother and his sisters and his everyone in the royal fashion, like your highness, and all of these terminologies. उसके अलावा जो है, he was very indecisive during his growing up time, very impulsive also. At the same time, he could be gentle and cruel also. इनका जो education हुआ था when he was 11 years old, उसी समय से इनका स्विट्जरलैंड में education हुआ था. And modern education played a very pivotal role. French education, Swiss education played a very important role in changing his personality. He was the first Iranian prince जो है जो foreign education के लिए बाहर भेजा गया था. और जब ये वापस अपना ईरान में एंट्री किए तो वहां पे लोकल मिलिट्री एकेडमी को इन्होंने ज्वाइन कर लिया, जिसमें ही केप्ट एनरोलिंग एंड गेनिंग अप द हाइट्स. ड्यूरिंग हिज कॉलेज एज अ प्रिंस ही वाज अपॉइंटेड एज द इंस्पेक्टर ऑफ द आर्मी आल्सो. तो सिविल और मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो भी कहीं पे हो रही है ईरान पे, इसका इंस्पेक्शन ये करते थे. ही स्पोक जर्मन, फ्रेंच एंड इंग्लिश एंड पर्शियन तो ये जानते ही थे. Now, what is the criticism that happened during his time? There was massive political repression and human rights abuse that took place during his time, during his reign. And but at the same time, because इनकी education बाहर से हुई थी, and he had good relations with the West, so he was often called as the stooge or the puppet monarch of Iran. And इन्होंने भी ये modernization के नाम पे जो religious culture है ईरान का, उसकी photography या उसका circulation, ये सारा चीज जो है ये बैन करके रखा हुआ था. So people saw him as a servant of the non-Muslim Western power. And this created a very strong, radicalization amongst the youth also. So also कि हमारा religious patronage system जो है वो खत्म किया जा रहा है, हमारी religious identity खत्म की जा रही है. We are getting very westernized. We are so, मतलब, one of the most inhabited civilizations of the world. Why do we have to, just be bootlickers for the West, be it the British or the German or the American? Why do we have to? And during his time, the number of political prisoners had also increased. Whoever used to question him was arrested. So ये बहुत बड़ा human rights abuse जो है इनके terminology के time पे, इनके term के time पे बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया. So that is when there was an uproar against him. Elections were held, and Mohammad Mossadegh, who was an author and lawyer, he became the Prime Minister of Iran for only 2 years, 1951 to 53. He was जब ये Prime Minister बने, so then the monarch was Mohammad Reza Pahlavi. But the story of Mossadegh is also very interesting. Mossadegh एक prominent elite Persian family में पैदा हुए थे तेहरान में in 1882. जब इनके जो फादर थे, he was the finance minister of Qajar dynasty, जो Pahlavi dynasty से पहले थी. And his mother was also coming from the lineage of the Qajar dynasty. इनके जो चाचा थे was a tax collector. उसके अलावा जो है Mossadegh therefore came from a very royal family patronage system. ये पेरिस गए अपना पढ़ाई करने के लिए, वहां पे फ्रांस में इन्होंने पढ़ाई की 2 साल के लिए. फिर 1911 में because of certain illness he had to come back. Then later again he went to Switzerland to study, do his PhD. He got his PhD and he became the first Iranian जिसको law में PhD मिला था from any European university. फिर इन्होंने political science पढ़ाया during the First World War in Tehran School of Political Science. That was the beginning of his political career. जब 1905-06 में Qajar dynasty के time पे हुआ था uproar for a constitution, उस समय पे भी he was a political activist. धीरे धीरे करके he started
becoming very, very politically active. He became the governor of the Azerbaijan province also. 1925 में जब रेजा खान, मतलब the father of the last Shah, जब इन्होंने कजर डायनेस्टी को डिसॉल्व करने की बात की और नया शाह रेजा खान बना, तो मोसादेक was obviously against it because he came from the Qajar dynasty anyway. But he continued teaching and he continued being part of academic activist community in Iran. He was also quite questionable of the Anglo-Iranian oil company जो ईरान में आके oil drilling और exploration कर रही थी. And इनका ये एक election manifesto था कि he will nationalize everything when he becomes the prime minister. तो जैसे ही ये प्राइम मिनिस्टर बने तो ईरान की ऑयल इंडस्ट्री को सबसे पहले इन्होंने नेशनलाइज किया. अब जैसे ही इन्होंने नेशनलाइज किया तो वेस्टर्न गवर्नमेंट को, यूएस को, यूके को काफी बड़ा लॉस होना शुरू हो गया आफ्टर दिस, क्योंकि उनको ऑयल का कंसेशन नहीं मिल रहा था. उनको जो एसेट्स जो उनके लग रहे थे कि उनके हैं वो उनको नहीं मिल रहा था. मोसादिक को ये लगता था कि ये जो एंग्लो इरानियन ऑयल कंपनी है ये इट इज नथिंग बट अ एक्सटेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर. ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है अभी भी ईरान को. तो इन्होंने नेशनलाइजेशन के लिए मुहिम पास की. इनका इलेक्शन मैनिफेस्टो भी था कि स्ट्रांगली बिलीव्ड कि ईरान इज द राइटफुल ओनर. और उस समय दिस वाज आल्सो द टाइम जब 1956 में फिर सुएज कैनाल को नासिर नेशनलाइज करेगा इजिप्ट में. सो and he strongly believed that we have negotiated for so many years but we have not received any kind of result. Most of our oil revenues go to the west. Our people continue to be surviving and suffering from poverty, backwardness, diseases. We do not, irrespective of having that kind of capacity for rentier economy through oil revenues, we are not able to take mileage out of it. So we'll not be giving any kind of profit of oil to the West. So he nationalized and he stopped any kind of, government interaction under his rule with the British or the West. 15th October 1951 में इन्होंने openly UN में ये बोला था कि जो oil industry है ईरान की, it has helped not the Iranians but the British. It has caused industrial development for the British and not. British government ने legal sanction का भी threat दिया था कि ऐसे कैसे Iranian refineries को अचानक से nationalize किया जा सकता है. But it continued and then he was able to do it. Now, what started happening was, which was later revealed, the CIA, the British intelligence, they carried out covert operation, छुपा हुआ operation, undercover operation, जिसमें they gave around 10,000 pounds per month and more to Rashidian brothers. There were two royalists जो मोनाक के रॉयलिस्ट थे. तो प्राइम मिनिस्टर और मोनाक का नहीं पड़ता था बिकॉज प्राइम मिनिस्टर प्रो वेस्ट था, मोनाक प्रो वेस्ट था, प्राइम मिनिस्टर जो था वो नेशनलिस्टिक था. तो ये रॉयलिस्ट यानी मोनाक के सपोर्टर्स जो थे उनको 10,000 पाउंड्स पर मंथ से ज्यादा का they started funding them with the hope कि they'll buy them off. और जो इरानियन पार्लियामेंट है वहां पे भी जो पॉलिटिशियंस हैं उनको भी they will buy them off. They also employed several press, street gangs, other influential figures, foreign agents, everything जो 1952-53 में इलेक्शन होने वाला था ताकि मोसादेक नहीं आगे बने. There are several more CIA covert operations that took place जहां पे they tried many
they tried a internal coup within, like they funded a coup against him because उसने इतना nationalize करके रख दिया था सारी चीजें, and काफी ज्यादा distress हो चुकी थी American and British governments after it. सारी diplomatic connections जो है ईरान के साथ cut off कर दिए थे. मोनार्क कुछ कर नहीं पा रहा था. It was also just the time जब Cold War was at beginning. Second World War के बाद यूके को काफी लॉस भी हुआ था, so it needed oil revenue जो उसको मिल नहीं पा रहा था. So CIA was employed. This was called as the Operation Ajax, जो न्यूयॉर्क टाइम्स में और बहुत सारे जगहों पे इसके बारे में अब अनक्लासिफाइड डेटा है. CIA ने तेहरान से लॉन्च किया अपना प्रोपेगेंडा कैंपेन मोसादेक के खिलाफ, एंड बहुत सारा जो मतलब इस पे काफी सारी किताबें भी लिखी हुई हैं, काफी CIA के डॉक्यूमेंट्स लीक भी हो गए हैं. जो क्लैंडस्टाइन ऑपरेशंस चल रहा था उसके बारे में भी अब ओपनली डिस्कस होता है, which forced or gave the autonomy to Pahlavi to dismiss Mossadegh from office and remove the position of the prime minister. There are many declassified documents which were released later by CIA in 2017, जिन्होंने openly reveal किया कि शाह तो डर के इटली भाग गया था, क्योंकि CIA को ऐसा लगने लगा था कि उनके जो प्रोपेगेंडा और कू जो काम कर रहा है वो शायद नाकामयाब हो, इट विल नॉट वर्क आउट. उस समय रूजवेल्ट था प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, तो CIA ने रूजवेल्ट को एक टेलीग्राम भी भेजा था कि you know things are getting difficult over here, maybe we will not be successful. Then massive popular protest started against Mossadegh. A lot of military confrontation also, a lot of protests also, very violent in nature. तो इसीलिए इसके तहत, जबकि ये पूरा फॉरेन क्यूरेटेड था, इसके तहत जो है आपका मोनार्क ने फिर मोसादेक को अरेस्ट करवा दिया. मोसादेक का अरेस्ट रेडियो पे ब्रॉडकास्ट हुआ. He was then transferred to the military jail. तो प्राइम मिनिस्टर का पोजीशन ही हटा दिया. शाह उस समय जब ये सारी चीजें हुई तो फिर बगदाद भाग गया था. Nevertheless, he was called, then he went to Rome, then he was called back. The Western government reinstated the monarch. The nationalization attempt was thwarted, and Mossadegh was later for the lifetime imprisoned, and he died in 1967. Even today, Mossadegh is called as, जैसे normally when the Western scholars write questionable articles on the fact that Islam is not compatible with democracy. But when a democratic election took place, then CIA conducted a coup and deposed the prime minister. And ये क्योंकि after every 50 years they declassify their classified information, that is why this became public knowledge. Then books were written on it. When democratic elections take place, the prime minister is deposed. When democratic elections don't take place, then they are questioned that Islam is not compatible with democracy. So you will always see that Iran has been very, you'll see a lot of, at several times that Iran keeps on jailing British or dual citizens, British Iranian, Canadian Iranian, American Iranian citizens, because they believe that they are spies who are still working.
for media agencies and others in behest of the West. So this deep trust deficit, which is between Iran and the Western countries, specifically happened after the arrest of the Prime Minister Mossadegh. In the next class, we will talk about 1979 revolution, what happened after that, why it took place, why theocracy was able to radicalize so many youth members in Iran, what were the problems with the Shah, why was he considered the stooge of the foreign powers? Obviously, after a situation like this, he will be. And then we'll talk about the impact of theocracy and the revolutions or protests which have taken place against the theocratic government of Iran in Iran itself. Uske baad, in the next class, we will talk about the recent protests of last year that took place in Iran, specifically about women's rights and the question of the wheel. So today's class is still here. Thank you.